सो हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, आप सबने सेक्शन ए सेक्शन बी कर लिया। अभी हम कर रहे हैं सेक्शन सी सैम्पल पेपर 2 का। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बोथ द सेक्शंस एंड you would have done the best, right? Now let's start with the section C solution. Now section C, as you know, it contains 3 markers, right? तो थोड़ा सा lengthy होंगे questions. So as we have given here, section C has 6 questions of 3 marks each. Right, so we are going to do a detailed solution along with the marking scheme as per the board. Right, कि जब आपका पेपर चेक होगा तो कौन से स्टेप्स के लिए कितने मार्क्स होते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेक्शन सी। राइट, सो फॉर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैलकुलेट 5 ईयर मूविंग एवरेज। नाउ ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और एक फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट राइट इन फॉर्मेट, अगेन यू लूज योर मार्क। सो कैलकुलेट 5 ईयर मूविंग एवरेज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी हम इसको एक टेबल में लिखेंगे, राइट? थोड़ा टाइम लेता है, बट कैलकुलेशंस आर नॉट सो टफ। ऑलवेज एडवाइजेबल टू अटेम्प्ट। Correct? Now let's start with this. So we will make a simple table and we will do all the calculations in the table, right? So here we have, first we will have for year, whatever is given here. So 2007, 2008, 2009, 2010, and we have like this till 2014, right? Now let's make it. Right, now the next is annual sales. So we will make the column for that. So what do we have? 4, 3, 2, 1, 2673, right? 2673, that is what we have got. Now what will be the next column? Next year column will be for the 5 year moving average हमें निकालना है, so उसके according होगा. So we have 5 yearly मूविंग टोटल। पहले हम क्या लेंगे? टोटल, और उसके बाद हम लेंगे एवरेज। सो वन मोर कॉलम विल बी देयर, 5 ईयरली मूविंग टोटल। टोटल की जगह क्या आ जाएगा? एवरेज। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओनली टेबल इज नीडेड हियर, नो ग्राफ्स। ओके, नाउ 5 ईयर में क्या होता है? वी टेक द टोटल ऑफ फर्स्ट 5 ईयर्स, राइट? फर्स्ट 5 ईयर्स, 1 2 3 4 5। सो कौन सी रीडिंग के करस्पॉन्डिंग हमारा एडिशन आता है? थर्ड, बिकॉज द मिड पॉइंट ऑफ फर्स्ट 5 इज थर्ड, राइट? तो 2009 के अलोंग हमारा एंट्री होना चाहिए डेटा का। फर्स्ट 2 विल बी ब्लैंक। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, राइट? डोंट मिस दैट पॉइंट। So 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, 10 plus 2 12. So we get the answer here 12, and it will be written along the third observation, that is 2009 के along. Now we move to the next. So अभी हम थर्ड से स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएंगे, 5। अब किसके अलॉन्ग आएगी? थर्ड ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1 के अलॉन्ग, दैट इज 2010 के अलॉन्ग हमारा टोटल आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो 3 plus 2 5, 5 plus 1 6, 6 plus 2 8, 8 plus 6 14. Very good. Now we get this. So now we start from here and again we go to the third observation. कहाँ पे आ जाएंगे हम? 2011 के corresponding. In this way we keep on doing it. So 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 6 11, 11 plus 7 18, right? Now we come to the last one. Now we start from 1 and we end up to 3, and अभी हम कहाँ पे आ जाएंगे? 6 पे आ जाएंगे। It is 2012 के along we will write. So 1 plus 2 3, 3 plus 6 9, 9 plus 7 we get 16, 16 plus 3 we get 19. So this is what we have. Last two blank जाएंगे. So this is what we have to write. Okay, now we have to find the average. Average के लिए आप लोगों को पता है what we do? We divide by 5. So simply we will do division by 5. Okay, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं 12/5 करके, नहीं तो आप यहाँ पे भी dividing by 5 for average. Anyways, you can write. Okay, so now if you make this line correct,
आपका फर्स्ट करेक्ट है, आपका एवरेज में गलत हो जाता है, सो डेफिनेटली यू विल गेट 1.5 मार्क फॉर दैट। एवरेज में अगर कुछ गलती होता है, 1 रीडिंग में, 2 रीडिंग में, उस पर डिपेंड करता है हाउ मच यू गेट। अदरवाइज यू मेक इट इन द सेम फॉर्मेट, यू विल गेट फुल मार्क्स। इट्स 3 marks स्टूडेंट्स, इट्स रियली वर्थ डूइंग इट। डोंट थिंक बहुत लंबा कैलकुलेशन है, नो, you should do it. Now let's do it. This will give you what? 2.4. This will give you what? 14 by 5. Very nicely we are doing it. So this is the format that we have 2.8, and then we have 18 by 5 that gives you 3.6, and then we have 19 by 5 that gives me 3.8. So that's my final answer, and if you write all this you get 3 marks. So it's worth doing it. फुल मार्क्स आपको मिलता है, बट फॉर्मेट में लिखिए, डोंट राइट इट इन योर ओन वे। और अगर रीडिंग्स आपकी गलत लिखी हुई हैं, टीचर्स कट द मार्क, 1 मार्क आराम से डिडक्ट होता है। कुछ कई बार तो दे गो विद इट कि नहीं, फुल विल बी डिडक्टेड बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन to the next. Now this is the or part for the same question. So now here we have to go for 4 yearly centered moving averages. Now 4 yearly में हम क्या कितने years लेंगे? 4 years लेंगे, but थोड़ा सा twist होता है 4 में. Let's see what is that. Okay, now let's again make the table. So again we will make the table for the year first column, and then we have the reading starting from 2010 to 2016, right? थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ के बनाइएगा स्टूडेंट्स टेबल। ओके, हियर तो बिकॉज ऑफ द स्पेस एंड ऑल आई एम जस्ट मेकिंग इट, बट एग्जाम में थोड़ा सा गैप, आई टेल यू व्हाई द गैप इज नीडेड। इट विल बी मोर क्लियरर एंड नीटर इन एग्जाम देन। नाउ इनकम 4, 5, 7, 6, 3, 4, 6. Okay, if by mistake if I have written some reading wrong, you can check your answer accordingly. Okay, now पहले हमारे पास क्या आएगा? 4 year मूविंग टोटल, जैसे पहले किया था हमने, 4 yearly मूविंग टोटल। 4 years को लेंगे और उसका टोटल निकालेंगे हम, राइट? फिर एक कॉलम आता है हमारा 4 yearly मूविंग एवरेजेस, 4 yearly मूविंग एवरेजेस। अब इसके बाद क्या आता है? फिर इसके बाद आता है सेंटर्ड। यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? सेंटर्ड। सो 4 yearly सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। Okay, so that is it. Now let's move on. Now we take 4 years. अब 4 year का मिडिल कुछ नहीं होता है, देखिए दैट्स इम्पोर्टेंट पार्ट, इसीलिए आपको बोला था थोड़ा गैप दीजिएगा। अब आपने जब 4 लिए तो 4 के मिड में क्या आएगा? 2.5 पे आएगा। अब 2.5 कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा, करेक्ट। अब ये प्लॉटिंग कैसे होगी? अब ये प्लॉटिंग नहीं हो सकती है, तो इसीलिए आपको बोला था गैप करिएगा। ओके, नीदर इट इज इन 2011 नीदर 12, उन दोनों के बीच में ये रीडिंग आनी चाहिए, परफेक्ट। ओके, नाउ 4 + 5 9, 9 + 7 we get 16, and then 16 + 6 we get 22, right? So 22 is there, correct. Now what do? We take the next 4. Okay, so we start from 5, now it will come between 2012 and 13, and we go to 3, right? Now let's add up all this, 5 7 6 3। हाँ, एक चीज़ और है स्टूडेंट्स, बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम एरोस बनाना कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है देखिए एरोस बनाना, बट एरोस से क्या होता है, हम थोड़ा सा easily कर पाते हैं काम, बट इफ यू थिंक यू विल नॉट बी नीटर इन इट, डोंट डू इट, बट रीडिंग्स करेक्ट प्लेस पे लिखिएगा। ओके, जैसे 22 के लिए यू कैन ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू शो कि ये रीडिंग यहाँ पे आएगा। सो एरोज एज सच शो करना सारे नॉट कंपलसरी। ओके, नाउ 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 3 21। ओके, नाउ वी मूव फ्रॉम 7 to 4। अब किसके बीच में आएगा? 2013 और 14 के बीच में आएगा। तो 7 + 6 13, 13 + 3 19, 19 + 4 23, राइट? ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो 7 6 3 4, oh wrong, 7 + 3 6 19, okay 20। now 13 + 3 16, 16 + 4 20, पहले I did 13 + 3। now the next 6 से लेकर हम कहाँ जाएंगे? 6 तक जाएंगे। अब ये रीडिंग किसके बीच में आएगा? यहाँ पे आएगा, करेक्ट। लेट्स स्टॉप इट हियर ओनली। ओके, नाउ 6 + 3 9, 9 + 4 13, एंड 13 + 6 19। अब ये रीडिंग्स कैसे प्लॉट हो सकती हैं? ईयर तो है नहीं, अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसीलिए हम इसका पहले एवरेज निकाल के फिर
हम निकालते हैं सेंटर मूविंग एवरेज। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका निकालेंगे बाई 4, वी डिवाइडेड बाई 4। तो अभी तो हम डिवाइड कर देते हैं, करेक्ट। अभी हम इसको प्लॉट नहीं कर सकते ग्राफ पे, रिमेंबर। सो 22 को अगर हमने डिवाइड किया 4 से, व्हाट वी विल गेट, 22 डिवाइडेड बाई 4, 5.5, करेक्ट। 21 divided by 4, what we will get, 5.25. 20 divided by 4, what we will get, 5. 19 divided by 4, what we will get, 3.75। अब हमें क्या करना है, अब हमें कहीं तो डेटा लेके आना पड़ेगा, राइट। नाउ सी, ये आपका जा रहा है 2011 और 12 के बीच में, और दूसरा वाला डेटा आ रहा है 2012 और 13 के बीच में। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज लेंगे तो वो किसके साथ आएगा, इट शुड कम अलोंग विथ 2012, क्योंकि आप उसको वहाँ पे प्लॉट करने वाले हैं, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ 5.5 और 5.25 का एवरेज निकालना है हमें। सो 5.5 प्लस 5.25 divided by 2, this is what we have to do. I'm writing the step because I'm just explaining you, you can do it directly also if you're clear. Okay, so what we will get, 10.75, 10.75 को if I divide, what will I get, 5.375। टर्मिनेटिंग है तो पूरा लिखे, ओके, डोंट थिंक कि टू प्लेसेस तक लेना है, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग। सो 5.375। सिमिलरली विल गो फॉर 5.25 एंड 5 का एवरेज। सो नाउ दिस विल कम अगेंस्ट 2013, ओके, दिस विल कम अगेंस्ट 2013। सो 2013 के अगेंस्ट आएगा ये। सो 5.25 एंड 5, सो व्हाट विल यू गेट, 5.125। Now I have written it directly. Okay, now we will go to the next. So for the next, what will you get? You will get this against 2014, right? Correct. 2012, 2013, 2014 के against आएगा. Now go for it. 5 और 5.5 और 4.75 का average. So what will it be? 9.75 divided by 2. So what will you get? 4.875. So this is what the answer is. So this will also make you score 3. So दोनों में easy कौन सा था? First one. That is a wise decision to do. Those who have done this is also correct. Calculations are not tough, but that was much easier. So whenever we have to have an internal choice, we should go for the easy one. Okay, so the first one was a good decision, otherwise this is also almost on the same grounds. Okay, this is what we have. Now let's move on to the next. Now 27th question is based on inferential and statistics students. Again, it's a 3-mark question. So the average nicotine content of a particular brand of cigarette is supposed to be 2.2 milligram per cigarette. A smoker of this brand wants to see if it is really 2.2 milligram or more. So what did he do? For this purpose, the nicotine contents of 50 cigarettes are measured. The sample mean based on 50 cigarettes is 2.95 milligram per cigarette. सो जो सैम्पल स्पेस है वो कितने का है, 50 सिगरेट्स का है, 2.95 उनका मीन था, एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.8 मिलीग्राम. So do the data provide enough evidence that the average nicotine content exceeds 2.2 milligram? Test at 5% level with critical value approach. और आपको वैल्यू दिया गया है. Now that's a very simple question. We have to use the formula for inferential statistics, but उससे पहले सबसे important होता है hypothesis लिखना. Though it is not mentioned here, please do not calculate the value directly. You have to be sure कि आपने hypothesis लिखा है, उसका 1 mark रहेगा. Yes. So let's write the hypothesis. So let's consider hypothesis. First, we write the null hypothesis. So null hypothesis, let's make it. So what is given here is supposed to be 2.2 milligram. So it's given that mu is equal to 2.2, exact 2.2. So we'll write equal to. So what the brand wants to check, whether it's 2.2 or not. So what's your alternate hypothesis? Your alternate hypothesis mu is not equal to 2.2. So for this you get 1 mark. Clear note. Right, now we go to the approach. Now we write the data first. So x bar is given 2.95 for the sample. Sample size is 50 and
Then we have standard deviation given here as zero point 0.8. Correct? This is what the data is given to us. Now let's move on. Okay. Now let's move on to the formula. So test statistic I am applying. So test statistic का क्या formula होता है? Test statistic is T. Correct? T calculated और T critical. Critical value approach word है तो आप C लिखिए. Now what's the formula? X bar minus mu अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने रो लिया है, सो लेट्स डिनोट इट विथ रो अपॉन रूट n because the sample size is greater than 30, right? So this is what we have. So again half mark will be there for the formula note. Correct? Now test statistic, let's go with this. Put the values. So 2.95 minus 2.2 upon 0.8 and upon root n है, so this will go in multiplication to root 50. Now root 50 is approximately 7 that you say, but we will use in decimals here. So we will can calculate it with long division as well. So for just for recap, let's do it quickly. 7 49, and then what will we get? 1. If you put the decimal here, we will 7 plus 7 14. So we put the two zeros here. Correct? This is how it goes on. Again nothing is there, we'll put the zeros here, and again we make it. Now we can go for 7 and then we get, so it's around 7.07. Okay, now let's make it. So 2.95 minus 2.2 will be how much? 0.75. 0.80 if I make it like decimal, and we can cut it, and this is 7.07. Right, let's make it with 5, 1 and 6, and here we make it 1 and 5. Now we make it 707 into 15 upon 1600. Okay, now let's make it 3, let's make it 5 2 0. Okay, now this is what we get. Now we will just multiply 2121 upon 520. Now let's calculate it. Okay, so let's make it. I've written 5. No, it's not 5, it's 3. Now let's divide it. 320 को 320 से हमें 2121 को divide करना है. That's simple calculation. So let's do it. So I'll do it here. So if I just make the division, 2121 with 320, let's make it with 3 6 are. Okay, so 6 0 12 1 9. Okay, now what do we get? 1 2 0 2. Okay, now what do we get? Decimal. Okay, let's move it. Now let's put it. So what do we get? 2010. So what again we will get 6.6 only, 1920, and it goes on. So 0 again 9, and here we get 0. Okay, now what do we get? This. Now if you want to make it to the next place, you can. So we put it, so we can make it 6.62. Correct? So that's your answer. Again, for all this calculation, you'll get half mark more, or sometimes you get 1 mark also. Now here the point is how you compare. So what is the test? That if your calculated value, so what is coming for you? Since your calculated value is greater than z of 0.05, that is what you are getting here. So it is greater. So if it is greater, then what do? We reject null hypothesis. So we reject null hypothesis. So null hypothesis we reject. So half mark will be for this. So it comes to 2.5. And what is 0.5? 0.5 is the final concluding statement. Remember students, statement क्या है कि हमारे पास इसका मतलब sufficient data है which shows that the nicotine content it exceeds 2.2 milligram per cigarette. So we have, so what is our conclusion? So what will we write? It means it provides sufficient data to show that nicotine content exceeds 2.2 milligram. Correct? Right? So we reject the null hypothesis that nicotine content is equal to 2.2 milligram per cigarette. Okay? So
So this is how the marks distribution is done. बहुत अच्छे से आपको स्टेप मार्किंग की जाती है. सो एवरीवेयर स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट. आप टेस्ट का लिखते हैं फॉर्मूला, आप टेस्ट की कंडीशन लिखते हैं, आप नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखते हैं. एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. Okay, so this is how it goes on. I hope you all have understood it and you would have done it correct also before. Now let's move on to the next. Now this is the question which is based on LPP. LPP is a very simple topic students, full scoring पे होता है और अभी भी आप सबने किया होगा अच्छे से. Now we have to find the value, maximum value of z is equal to 3x plus 4y. Graph was already given to you. आपको ग्राफ को रीड करके बस मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए? कॉर्नर पॉइंट. सो लेट्स फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स हियर. सो कॉर्नर पॉइंट्स आपको कैसे निकालने पड़ेंगे? अभी आपके पास तो ग्राफ ही नहीं है जो लेबल्ड है. वी विल डू इट एल्जेब्रिकली. तो अभी हमें ये देखना है कौन सा इक्वेशन किस लाइन का है. सो ए बी लाइन का इक्वेशन. ओके, नाउ ए बी लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104. ओके, now B point is on y-axis. Correct? B point on y-axis. It means for that point x coordinate will be 0. So x will be 0. So if I put x 0 in the line equation, what will I get? The value of y 104. So this is corresponding to this. So x 0 y 104. Now for line CD. सी डी लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 76. नाउ इफ आई गो फॉर दिस, so what will you get? It is intersecting again. D point is on y axis. Correct? So what will be your x? 0. So put x 0. So what will be your y coming? Y will come 38. Y will come 38. So coordinates of B are these. Coordinates for D are these two. Correct? Now what about E? For E, we will have to find the point of intersection of A, B and CD line. So for E point. So for E, we have to find it algebraically now. So let's do it. So 2x plus y is 104 and x plus 2y is 76. So you can use elimination, you can use substitution, whatever you are comfortable with. I am using elimination here. So I'm multiplying this second equation by 2 and then I will subtract the two equations. So minus 2x minus 2y 4y हो जाएगा and this is equal to 150. ये दोनों कट हो गया. So what do I get? Minus 3y and here minus 48. Right? So this is I get. So what is y? Y is 16. So what's the point? The point is y coordinate 16. So what will be x now? Let's find it. So x is 76 minus 32. So which gives you 44. So what is your point coordinate? Your point coordinate is 44, 16. Now we will make the table here. कौन सा टेबल बनाते हैं आप? कॉर्नर पॉइंट्स का जो टेबल बनाते थे उससे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. सो व्हाट इज दैट टेबल? वी मेक कॉर्नर पॉइंट्स and then we get the maximum value of z. What's your z? 3x plus 4y. Now there are three corner points. One is B with the coordinates 0, 104, with D with the coordinates 0, 38, and then E with the coordinates 44, 16. अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है. So let's calculate the maximum value. 0, 104. So x is 0 and y is 104. Now let's calculate it. So 104. If I put 104 in place of y, what will I get? 3 into 0, 0. 4 into this, what will you get? 416. Next one, 0, 38. Again, it's on y-axis. So we will put again x0, y 38. So 38 into 4. 154. Now we come to the last one. The last one is 44, 16. Let's calculate it. So 44 in place of x plus 16 into 4. So what will you get? 132 plus 64, which is 196. So what is the maximum value? This is your final answer.
सो मैक्सिमम वैल्यू, अब आपके पास इसकी मार्किंग कैसे है, हाफ मार्क फॉर दिस, half mark for this, half mark for this, 1 mark for this table, and half mark for the final answer. What is your final answer? Final answer is 0,104 पे maximum value होगी. कितना maximum value होगा? 416. That you will write as a final statement. Right? So maximum value is 416 at 0,104. When x is 0 and y is 104, then it will have a maximum value for the feasible region. So half mark will be for the final answer. This is how the marks distribution is done. So this is how we get the correct answer. Right? Clear to all? Very nice. Very good. Now let's move on to the next. Now it is known that 3% of plastic buckets manufactured in a factory are defective. During the using Poisson distribution on a sample of 100 buckets, find the probability of 0 defective buckets. At most, one bucket is defective. Now this is a question which is based on Poisson distribution. बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन है. 100% स्कोरिंग है. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इजी स्टूडेंट्स. राइट नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज एंड मेक इट आउट. सो हमें क्या चाहिए होता है पॉइजन के लिए? लैम्डा मेन होता है. और लैम्डा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एन पी. व्हाट इज एन, व्हाट इज पी? एन इज टोटल. टोटल व्हाट? टोटल सैंपल. ओके, अगेन सैंपल. यस, टोटल आप कितने सैंपल में है. तो यहाँ पे कितने का सैंपल है? 100 बकेट्स का सैंपल है. सो व्हाट विल बी? 100 टोटल आइटम्स दैट यू हैव. पी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. किसकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे हमारे लिए सक्सेस? डिफेक्टिव की. ओके, सक्सेस. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बकेट्स. कितना प्रोबेबिलिटी दिया है? 3%. Okay, now what will be your lambda then? Lambda is basically the mean here. So as we know, 100 into 3 by 100. So what's your lambda? 3. This is the first part of this. Okay, so for this you will get half mark. Lambda calculate करने का. Now we come to the question. Now what's the formula for the probability of x is equal to r for Poisson distribution? E raised to minus lambda, lambda raised to r upon factorial r. That is what the formula says. Now again half mark for the formula you get. And then 1 mark for each part. Now we come to the parts. Now 0 defective buckets means r is 0. So what will you get the answer as? E raised to minus lambda, lambda raised to 0 upon factorial 0. So no defective buckets. Okay, 0 defective buckets. So e raised to minus lambda. What is your lambda? 3. So 0 minus 3 raised to 0 upon factorial 0. What is factorial 0? 1. So what's your final answer? E raised to minus e. What's the value given? 0.049. So this is the probability. Simple. And you get 1 mark for this. Yes. Second, at most one bucket. At most means maximum one bucket. So only 0 वाला case जो है आपका unfavorable है. So what will you find? So P of x greater than 1. So what will you get? At most 1 greater than equal to. So 1 minus P of x is equal to 0. सिर्फ 0 का case हम total में से minus कर देंगे. So what will you get? Oh, maximum. We get at most means maximum one bucket. So at least hota, then we would have done the greater one. So now at most one bucket means that either 0 buckets or either 1 bucket. So let's do it. So we go for P of x is equal to 0 and P of x is equal to 1. Now what will be P of x is equal to 0? Already we have found. Otherwise if you put the formula, it comes like this. लैम्डा की जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3. ऑलरेडी फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है. यहाँ भी e रेज टू माइनस 3 आएगा एंड अगेन नाउ माइनस 3 रेज टू 1 हो जाएगा एंड फैक्टोरियल 1 इज ऑल्सो 1. सो e रेज टू माइनस 3 आप कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट. दिस इज एन ईजी वे. ओके, सो 1 एंड व्हाट डू यू गेट देयर? e raised 3 raised to 1. Okay, so 3 raised to 1 will be what? 3. So we get this. So what do you get?
4 into 0.049. So what will be the answer? We get 6, we get 3.196. What do you get the answer? 0.196. इंडिविजुअल कैलकुलेट करने से अच्छा है आप कॉमन लीजिए, वो जल्दी होता है कैलकुलेशन. अगेन 1 mark for this. Let's come to 30th. Now a firm anticipates an expenditure of 3 lakh rupees for plant modernization at the end of 15 years from now. How much should the company deposit at the end of each year into a sinking fund अर्निंग इंटरेस्ट 6% पर एनम? तो ये क्वेश्चन सिंपली किसका बन जाता है? सिंकिंग फंड का बन जाता है. फाइनेंशियल मैथ्स का क्वेश्चन है और हमें सबसे अच्छी बात है हमें वैल्यूज दी जाती हैं स्टूडेंट्स, तो आपके लिए ये फुल स्कोरिंग होता है. आप कैलकुलेशन से मत घबराइए, बहुत शॉर्टकट्स हम आपको बताएंगे. लेट्स स्टार्ट विद इट. सो सबसे पहले हमारे पास 3 लाख क्या है? 3 लाख है जिसके लिए हमें काम करना है, इन्वेस्टमेंट करना है. सो दैट इज योर टोटल अमाउंट दैट यू नीड, दैट इज ए. सो दैट इज 3 lakhs. ओके. सो नाउ द पॉइंट इज आर क्या है? आर है हमारे पास 6%. सो आई विल बी वॉट? 6/100 पर एनम एंड ही इज गोइंग टू गेट इट एवरी ईयर. सो हमारे पास एन क्या है? ईयर ले जा रहे हैं हम. सो 6/100. नाउ व्हाट इज योर एन? एन इज 15 ईयर्स तक ही इज गोइंग टू सेव मनी. तो हमें ये निकालना है कि वो कितना मनी सेव करे एवरी ईयर सो दैट ही गेट्स अ लमसम अमाउंट ऑफ 3 लाख रुपीज. So what's the formula of sinking fund? A is equal to R 1 plus I raised to n minus 1 upon I. अब इस फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं. और कई बार हमें आई कैलकुलेट करने के भी मार्क्स मिलते हैं अगर एनएम की जगह क्वार्टरली या कुछ होता है, सो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. कई बार फॉर्मूला का 1 mark भी होता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. सो फॉर्मूला ऑलवेज टू बी रिटन. ओके, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सो ए इज 3 लाख. R we have to find. So 1 plus I raised to n क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 plus 0.606 राइट, रेज टू 15 और उसका वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, तो नो नीड टू वरी अबाउट इट. ओके, सो हाफ मार्क इसलिए यहाँ भी ऐड हो जाएगा अभी आपका अपॉन आई. आई इज वॉट? 0.06. okay, so again half mark for this, half mark for this. Okay, so this is how it goes on. So what's your point? So 3 lakh. Correct. Now 3 lakh 0.06 will go that side and 1.06 raised to 15 minus 1 will come to this side. Right? हमें वैल्यूज प्लस में ही दी गई है. करेक्ट. सो दैट इज योर आर. करेक्ट. सिंपली हमने रीअरेंजिंग ऑफ द टर्म्स किया. अभी आपको क्या करना है? सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है जो दी गई है. सो योर आर विल बी 3 लाख इंटू 0.06. आप चाहे तो यहाँ पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड यू कैन रिमूव इट एट द नेक्स्ट. 2.306 माइनस 1 पॉइंट रिमूव करके 2 zeros कैंसिल हो. जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं चेंज, डायरेक्ट करिए. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, डोंट टेक द चांस, चेंज इट इनटू फ्रैक्शन फर्स्ट एंड देन रिमूव द डेसिमल्स के जीरोस. ओके, नाउ व्हाट डू यू गेट? 3000 into 6 upon 1.3966. So it's a very simple calculation, students. We put 4 zeros here. We have removed all the decimals, everything. Now 6 threes are 18. So 1800007 zeros will come divided by 13966. That's the last calculation. किसी को अगर ये नहीं करना है, टाइम शॉर्ट हो रहा है, सो हाफ मार्क एंड देन 1 mark फॉर ऑल दिस. हार्डली आपका 1 mark जाएगा. उसके लिए आप पूरा क्वेश्चन मत छोड़िए. आई हैव सीन द स्टूडेंट्स नॉट प्रैक्टिसिंग फाइनेंशियल मैथ्स. प्लीज डू प्रैक्टिस इट. ओके, it's very important. Now let's make it 1800000 7 zeros. Okay, divided by 13966. आपको डिवीजन करना है, रेगुलर नॉर्मल डिवीजन करना है. आप उसको करिए और आंसर लिखिए. राइट, इट्स नॉट टफ एट ऑल. वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एट ऑल, यू विल एट होम यू विल गेट इट. इफ आई डू इट हियर, देखिए टाइम नहीं लगता है. 7 zeros 13966. ऑफ कोर्स 1 से जाएगा पहले. सो 13966. ये
I would recommend आप लास्ट में करिए if you are short of, but otherwise it will not take time, right? Then we come to 0, correct? So now then we go with it. So what do you get here now? 1. Now it will go for 2. In this way we can move forward. Okay, so 2 6 are 12, 2 6 are 13. And then we get 9 here. Then we get 7 here. And then we get 2 here. This is how it can go on. So if I keep on doing, I'll keep on getting my answer. So it's easy. It's not tough at all. Okay, so if I do it, what will I get? Again, if I divide it, 0, and now we get 4 here, now we get 2 here, and now we get 1 here. So now if I go for one more 0 down, so it will come with 8. In this way it goes on. Okay, clear to all? This is how we can do. Okay, so if I write the answer and if I do it, what will I get? 8 6 8, then 2, then 5, then 7 forward, then 3 forward. Right, in this way it goes on. So if I just do it again and again, what will I get? I'll get 1 2 8 8 8.44. So this much amount, and rupees is important, units always you get the mark. So this is how we move on. Okay, so just go with that, that is important. Okay, so 2 here, 5 here, then 3 here, then 1 here, 2 here, 1 here. So again it goes for 8. This is how it goes on, students. No need to worry. Be clear with the fact. आप जितना कैलकुलेशन, और ये कैलकुलेशन शो करिए, इसको रफ में भी मत करिए, बिकॉज रफ में करने से कोई फायदा नहीं है. यू वोंट बी एबल टू रीचेक योर आंसर एंड द एग्जामिनर विल सी द कैलकुलेशन एंड से yes a student has done. If there is some minute error तो हाफ ही मार्क कट होगा. So please do it in the rough space. और फेयर में भी करेंगे, पेपर का शीट हमारा बहुत बड़ा होता है बोर्ड का. No worries for that. Okay, clear to all? So this much money has to be deposited by the company every year to get a lump sum of 3 lakh rupees. Clear? Now let's move on to the next. This is the or part. A man borrowed some money and paid back in 3 equal installments of rupees 2160. Now, what sum did he borrow if the rate of interest charged was 20% per annum compounded annually? So, find also the total interest charge. Now, this is a question, again, I would say this is based on sort of annuity, sort of इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, बट इसमें एनुअली है तो इसलिए हम ईएमआई नहीं ले सकते, राइट? सो इट इज, बट इट इज अदरवाइज सेम एज एन्यूटी और सिंकिंग फंड ऑल्सो. बट सिंकिंग फंड का नाम नहीं है, बट अदरवाइज इट्स द सेम. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर द वैल्यू इज गिवन फॉर माइनस. अब ये माइनस की वैल्यू कैसे काम करती है देखिए. नाउ हियर कितना इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है? 2160 रुपीज का. सो योर आर इज 2160. Your present value of annuity, that is how we calculate, that we have to find. Now what is your n? N is 3 equal installments annually. Rate of interest charge. So rate of interest कितना है हमारा? 20% annually. So this is what we get. Clear? Now what is the formula for negative power? That is important. Don't think कि हम इसको 1 upon use करेंगे. It will be tough for you. Let me give you the formula. So same formula जो sinking fund का होता है उसको हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे. Okay, so P R upon I, annuity का formula in negative power basically. So this is the formula. That's it. So P is equal to, that is the present value, R upon I is into 1 plus I raised to minus N. Correct? Now let's move it and put the values. So R is 2160. What's your I? 0. 0.2. Now 1 plus 0.5786 raised to minus, sorry, first let me put the value 1.20. 1 प्लस आई का वैल्यू आपने कैसे निकाला? 1 प्लस 0.20. सो 1 प्लस 1.20. नाउ वी हैव टू सिंपली कैलकुलेट दिस, राइट? सो 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं. 10800. ये तो और भी इजी कैलकुलेशंस हो गए, राइट? सो 1 प्लस 0.5786. नो पावर्स, नथिंग. सो 10800, 1.5786. Correct? This is what you have to calculate.
Now the important part, what do we have here? Now, oh, I've written plus, it should be minus. Sorry, by mistake I've written plus, now it should be minus. That's why it's coming so big number. So now we have to subtract it. So 4, 1, 2, right? So this is what we get. Now we are going to solve it. So what will you get here? On multiplication, that you have to write the answer as. Okay, so now if you want to remove the decimals and all, आप इसको remove करके यहाँ पे 10,000 लिख सकते हैं, and then you can multiply only 108 and 4214 and divide by 100. That is what we can do. Okay, so this is what we have, 4214 and 108. 0000। बहुत इजी कैलकुलेशन से, देखिए 1 से करना है, हो गया आंसर आपका। If you run away, you don't get the things, students. Don't run away, face it. You will get your answer. Okay. So 4541.1. Correct? That's your answer. So if there's any error, check it yourself and do let me know. यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखो छोटा सा एरर आया ना, राइट? करेक्ट, इसीलिए कैलकुलेशंस करना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू रीचेक इट यू गेट योर मिस्टेक्स, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, समटाइम्स व्हेन वी डू फास्ट टैप हैपेंस, बट वहीं पे कैलकुलेशन करिए, रफ पेज पे मत करिए, डू इट इन फेयर। ओके, अगर हमारा ये छोटा सा एरर होता भी, द एग्जामिनर वुड हैव सीन यस पूरा कैलकुलेशन किया, छोटा सा 3 और 2 का डिफरेंस है, ओनली हाफ मार्क वुड हैव बीन डिडक्टेड। Now, for this, again, if I go with the values, this is 1 mark, and again for all this, you get 1.5. Now, the last part, we have to calculate the interest charge also. Interest charge क्या होता है? Total paid amount, करेक्ट, वो कितना है हमारा? 3 into 2160, 6480 रुपीज़ हमने टोटल पे किया। उसमें से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 4551 आ रही है हमारी वैल्यू, करेक्ट? तो इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ, दोनों का सब्ट्रैक्शन, राइट? सो हमारे पास मैन ने, अ मैन बोरोड सम मनी एंड पेड बैक इन इक्वल, सो कितना मनी उसने बोरो किया था? 4551। सो इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ? इंटरेस्ट चार्ज विल बी अमाउंट पेड माइनस मनी बोरोड, मनी बोरोड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। So 6480 minus 4551.12. Okay, so this is what we have. So let's subtract it and get the answer. So we get 8812 hai. Now we get 8 again. Now we get 8 minus 5, that is 7 minus 5, and now we get 9, and now we get 1. So this much was the interest charged. So this is what we have. So that's the final answer. Clear to all? Right? So which one was easier to solve? Both were equal, but the first one will take less time because it's been two parts. That's it. Otherwise, both are easy. Okay, now let's move on to the next. Now the next question is based on integration. Now we have to integrate it. Integration is easy here. So dx upon 1 plus exponential x into 1 plus exponential minus x. इसमें ध्यान क्या देना है, दोनों टर्म्स में एक्सपोनेंशियल एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दैट्स इंपॉर्टेंट। लेट्स मेक इट पॉजिटिव फॉर बोथ, क्योंकि उससे हमें सब्स्टिट्यूशन भी मिल जाएगा। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ओके, फॉर इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स चेंज इट टू द पॉजिटिव पावर। सो आप एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल एक्स। सो व्हाट विल यू गेट? dx 1 plus exponential x, and here also you get 1 plus exponential x, and the LCM will go in numerator. Now it's a very easy question. If I substitute 1 plus exponential x as t, what will I get? I will get exponential x dx as dt, right? So now let's do the substitution. So dt ka value, and here you get t square. Simple, very simple. So what is the integration of 1 upon t square? Use the power rule for integration. So what's the answer? X raised to n plus 1 upon n plus 1. So हमारे पास यहाँ पे t क्या है? -2.
So what will you get? T raised to minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1. So plus C. So that's your answer. So what do you get here? Minus 1 upon T, that is minus 1 upon exponential x. So that's your final answer. So this is what you get. Correct? So this is whole 3 marks. So 1 mark for the substitution, 1 mark for changing, half mark for this formula, then 1 mark for this, and 1 for the half for the final answer. Correct? Now let's move on to the next. Now this is the last question for the section. That's the OR part. Again, there are two methods of solving this question. One, you can use by parts directly, and one is after substitution, you do that. Okay? Correct? Now let's do it. So if I put x square as t, what will I get? 2x dx is dt. So what is the value of x dx? dt by 2. So let's put it. So log, आप 1 + x² को भी t ले सकते हैं, वो और इजी बना देगा आपके क्वेश्चन को. सो लेट्स सी, log t dt by 2. सो 1/2. log t को आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं? बाई पार्ट से. ओके, सो व्हाट डू यू गेट? यू टेक 1 एज द फंक्शन, राइट? सो log t and then 1. ओके, सो नाउ व्हाट विल यू गो? वी कैन डू द बाई पार्ट्स. सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे हम. सो व्हाट विल यू गेट? log t as फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus differentiation of log t and integration of dt, that is 1, and दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन. So what will you get? 1 by t, 2 log t, 1 का इंटीग्रेशन t, log t का इंटीग्रेशन 1 upon t, और 1 का इंटीग्रेशन this I think is clear to everyone. Okay, so 1 upon 2 t log t minus now 1 का इंटीग्रेशन t. Now substitute the value. What do you get? 1 plus x square log 1 plus x square minus 1 plus x square. That's your final answer. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे 1 मार्क के लिए, राइट? 3 मार्क्स के लिए. सो दिस इज हाउ वी गो. दिस इज बाई पार्ट्स एंड देन वी गो फॉर दिस. आप इसको डायरेक्ट बाई पार्ट से भी कर सकते हैं. Okay, so these were the questions for section C. I hope it's clear to everyone and you all would have scored full marks. Okay, so we'll come with section D and E shortly. Okay, till then, goodbye, thank you, and if you have liked it, please share and subscribe.